So ADI, PDI, this is the best that you can make your learner go into this sort of techniques, and then you can make a plan, you can have the risk management in it, you can have the teaching strategy in it. The ADI, PDI standard check. I do have people that they fail and they don't know what question to ask and what things to say and all that. And this is again a thing people don't understand, that in the lesson strategy, that the teaching strategy of yours, they're asking you that have you taken the live examples, have you given them the examples of live scene out there, and these are the live scenes. One of them that, if you think that, oh, this is not there, how can I say this, and the adoption and all adoption, I always tell you, it's not about changing the lesson plan, it's not about just changing the road, it's not about telling the learner I'm taking control of this and you are responsible this and I responsible. You understand that this is just a part of it. The adoption means that suppose if there is a road that you're going through and there is learner is okay now, they're comfortable and this road is straight and you've got no else to talk about, you can go into these potential hazards. That what do you think today when you're going through this road, tomorrow school time or the ice cream van, if they're there, what sort of hazard they will be making for you. So you making them adopt on the same road at different time, different day of their driving. If that makes sense. So adoption is that they're going through and there's on the left hand side there's a bus stop but there's no bus. So you talk about what about the next bus stop. This is empty but the same bus might be on the next bus stop. What sort of potential hazard they will be creating there for you. So you making the learner think, I'm doing this is nothing at the moment, but yes, of course, that makes sense. What about half an hour later, 2 hours later, if I come on this road, or 5-10 minutes on the drive, 2 minutes further down, I will be going through a bus stop, and what sort of hazards that is creating, that bus will create for me, and what should be I ready for. So developing a potential hazard is a basic key of your part 3 strategy and teaching strategy and the risk management and the lesson plan. Don't stick with your lesson plan. Lesson plan is a start. Lesson plan is something that you want to achieve, and also the four categories, the trained and the partly trained and the license holder new and the license holder experienced. What does that mean? If full license holder is there for you and they can't make mistakes, or their mistake is very limited, or they go into like minor stuff, can't you make them adopt verbally for the next time, because they're here with you today to make them learn all the time, driving 24 hours. And on one road, the circumstances, the conditions, the traffic, the weather, atmosphere, it will not be same on one road. It will be different throughout the timing. So you make them ready for all the scenes. And if you talking about a bus stop, if you're talking about the ice cream van, if you're talking about the ambulance, fire brigade, if you're talking about the dog with the lead, dog with the man, a lady with the pushchair, pram, shopping bag, children, you're talking about zebra crossing, somebody's heading towards it, are you talking about somebody's stopping next to them smoking cigarette, potential or developing, and the person who wants to cross, what will be their body language, what will be their action? They will be looking around both sides to see if they're stopping so they can cross the road.
So these are the things in part 3 we train you for. And part 3 is about your drive as well. Normally, the drive of yours, I have that experience. I know that's what I'm talking about. You drive something differently, or even though you're very safe in that drive, you never had accident, you've got no claim bonus, police never stopped you, does not mean that you can talk about that drive of yours, you can deliver your drive. It means that you should be able to sit relaxedly and stay in front of the learner and stay behind the learner as well. It depends on the circumstances. So hope this is making sense for you. And जो चीज़ भी आपने कोर कम्पिटेंसीज़ के अंदर, ज़ाहिर है कोर कम्पिटेंसीज़ अगर उन्होंने बनाई हैं व्यूअर्स, तो इसका मतलब क्या है कि 17 के अंदर आपको वो आपका लेवल हाई है ना, उस हाई का मतलब है कि आपको हर चीज़ के अंदर तो वो नहीं चेक करेंगे, वो मेनली आपको देखेंगे कि आप 17 को ओवरकम कर सकते हो। 17 के लिए आपको फिर 27 लर्नर को अचीव करवा सकते हो, और लर्नर अपनी मदद आप और आपकी हेल्प से 43 को अचीव करेंगे और फिर जाके टेस्ट पास होंगे। तो आपका जो टेस्ट है वो कोर कॉम्पिटेंसीज है, लर्नर को पास सिखाना है, पास होना फेल होना नहीं, लर्नर को ये मालूमात होनी चाहिए कि आप जो उसको बता रहे हैं वो किसी दूसरा जो सुनने वाला है उसको मेक सेंस करना हो। जैसे मेरा एक में कल परसों मेरा लर्नर था, वो पास हुआ आज, 17 साल का बच्चा था। तो जब वो पहले आया, मैंने बड़े प्यार से बड़े मज़े से उसको बड़े सुकून से हर एक चीज़ को डिलीवर करवाया। उसको 1-2 प्रॉब्लम्स थी कि वो बाप की का वो ट्रैक्टर चलाता था, फार्मर थे, तो उसका वो गेयर, वो जो हैवी गेयर होते हैं, स्ट्रॉन्ग गेयर होते हैं, तो उसी तरीके से गाड़ी का गेयर और स्पीड का जो है वो क्लियरली बोल देता था। बड़ा मज़ाहिया बच्चा था वो। बोलता मैं अपना टाइम कवर करता हूँ मिस्टर बट, मैं देखता हूँ कि मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं जल्दी गाड़ी चलाऊँ, तेज़ चलाऊँ, ताकि जो घंटा 2 घंटे तू मुझे लेसन देते। मैंने कहा बेटा ऐसा बात नहीं है, ऐसे ना सोचो। बोलता है मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ स्पीड, मेरे दिमाग में ये मशीन चलती है। वो सच बोल रहा था, सच्चा बच्चा था। तो मैंने भी इस बात का फिर गुस्सा नहीं किया है, ठीक है। तो आराम से उसको, कभी मुझे होता था यार क्या कर रहे हो तुम, इतनी सीरियस गलतियाँ कर रहे हो और बोलते हो मैं टाइम कवर कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम ये। मैंने फिर उसको टाइम थोड़ा फालतू देना शुरू कर दिया, अपनी टेक्निक इस्तेमाल की। फिर मैंने उसको बोला कि अब देखो मैं टाइम तुझे फालतू दे रहा हूँ, तो फिर भी अगर तू ऐसे करेगा तो मेक सेंस करता है, लेकिन मैं फिर भी कभी आज भी पास होके उसने कहा ऐसा था, मैं ऐसे सोचता था। अच्छा, उसको मैंने फिर जब वो एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज से निकला, अब मुझे तो पता था ना, यहाँ जो वीडियो मैं लगाता हूँ व्यूअर्स को तो नहीं पता है, जो देखने वाले हैं उन्होंने तो अपना ही बताना है, मैंने तो इन्फॉर्मेशन के लिए लगानी होती है। मैं कोई मिकी करना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे किसी की हौसला शिकली नहीं करना चाहता हूँ, किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन दुनिया डिफरेंट भी है, दुनिया उस लिहाज से देखती भी है। कोई एक थे जिन्होंने किया जी कि नहीं ये शाउट हो रहा है, एक था कि किसी ने कहा जी नहीं लर्नर को तो मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे भाई आपके बच्चे छुरियों की तरफ दौड़ेंगे तो आप उनको मौके दोगे? अरे भाई आपके बच्चे छत पे चढ़ के बोलेंगे कि हमें मौका दो, हमने छलांग लगानी है, नहीं समझते हो, ठीक है। मैं मौका देता हूँ, मुझे पता होता है। कोई भी बंदा उस गारंटी से नहीं कह सकता है कि मैं सही हूँ, लेकिन मेरा 51 लेवल है। डीब्रीफ में लोगों के वर्के भरे होते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लर्नर ये था वो था, बात नहीं थी, समझ नहीं रहा था लर्नर को फीडबैक असल नहीं मिली है, लर्नर की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं थी, वो पॉपिंग स्ट्रेटजी नहीं थी, लर्नर की मिस्टेक और थी, बात और हो रही थी, लेसन प्लान और था, बात और हो रही थी, प्रम्पटिंग हो रही थी, टेलिंग। मेरे के ऊपर 3 लफ्ज़ दे, थैंक यू, वी एंजॉयड योर लेसन। ऐसी बातें थी मेरी, हमेशा यही बातें रही हैं। बेशुमार लोगों को मेरी इन बातों से बड़ा इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन आज तक अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी ने ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कहे कि यार ये क्या है, ठीक है। मुझे इस तरह का कोई कहीं से रिमार्क्स नहीं मिला है।
तो वो लर्नर उस लेवल पे पहुंच गया। अब मैंने उसको फिर वो उसकी आंखें खोलनी थी, थोड़ा उसको तैयार करना था कि ये बाहर से शीशा बंद करो, आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है, कोई बोल ना जाए, कोई कह ना दे, कोई इस तरह की बातें। तो मैंने लेसन प्लान किया, वो आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने उसको सेव किया, शेयर किया। एक भाई का कमेंट भी आया, उनको सेंस था कि हाँ, मैंने अप्रिशिएट किया उनको कि हाँ भाई आपने सही किया। उनको मैंने आज फिर वो फीडबैक भी भेजी कि देखें मेरा और आपका तजर्बा उस लेवल पे था कि लर्नर पास हो गया। और लर्नर ने भी फिर कहा कि यार वो जो मैंने उससे पूछा कि क्या तू सोचता है कि ये जो शाउटिंग थी, स्क्रीमिंग थी, या मौका नहीं दिया? उसने कहा नहीं, मैं जहाँ पे गलत था तो मुझे क्यों आगे जाने देता। जैसे उसको एक मिसाल मैंने कल दी कि एक एरिया बहुत बिजी था, मास का टाइम था, जुमे का टाइम था, मैंने कहा मैंने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन प्लान मेरा ये था कि इसको उस एरिए में थोड़ा बिजी ट्रैफिक में, वो बड़ी जगह मिलती नहीं है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की, स्ट्रेस हो जाता, मैं हो जाता हूँ, ये क्यों नहीं होगा। तो जब मैंने उसको उस एरिए में रखा तो मेरा प्रोग्राम था आधा घंटा, इससे ऊपर मैंने नहीं रखना था उसको। तो जब 10 मिनट के बाद उसने दिल छोड़ दिया, मैंने कहा बट मिस्टर भट्ट ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे टेस्ट सेंटर की तरफ ले चलो, मैं तो रोडों पे। मैंने कहा मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, मैंने तो देखना है यहाँ पे ही, और फिर नमाज पढ़ के चलेंगे। मान गया। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उसको रेस्ट करवाया। मैंने कहा अब ये गाड़ी यहाँ पे बंद करके इसको सोचते रहो। दूसरे दिन आज वो पास हुआ तो उसने कहा कल की ये बात है, आज थर्सडे की और फ्राइडे की, और आज के उसने पास हो गया। माइनर 0 माइनर 17 साल, और पूरी ट्रेनिंग मुझसे ली फ्रॉम बिगिनर, 3-4 हफ्ते का कोर्स था। तो वो बोलता है कि कल अगर तू वो ना करवाता तो आज मेरा स्ट्रेस लेवल इतना डाउन ना होता, मैं आज बहुत काम हूँ। मैंने कहा देख लो ये सारी बातें तुझे कहाँ से मिली हैं? तो बोलता है ये तेरा ही तजर्बा है। तो मैंने कहा अगर मैं वहाँ से मीठा बन जाता और तेरे से एग्री कर जाता तो फिर? तो बोलता है ना, फिर मैं नहीं सीखता था, तू मुझे स्टॉप करता था, जहाँ पे मैं रॉन्ग था वो तू अच्छा करता था, कि मुझे टोकता था, मुझे स्टॉप करता था, तो फिर जाके मैं लर्न करता था। अगर तू मेरे साथ एग्री कर जाता तो फिर मैं सही हूँ ना। उसकी बातें देखें, 17 साल का बच्चा था। तो आज वो पास हो गया। तो हकीकत में उन लोगों के मुंह पे फिर चमाटा ही पड़ा जिन्होंने वो कमेंट छोड़ा हुआ था। मैंने फिर वो लगाया उनको, मैंने कहा देखो पब्लिक को डिसाइड करने दो कि आज बच्चा वो खुश है, आज उसका फ्यूचर बना है, या मैं उनसे आपकी तरह मीठा बन जाता। मैं पता इंस्ट्रक्टर हैं या नहीं है, अगर ट्रेनर होते तो उनके कमेंट इस तरह के नहीं होते थे, वो उनका कोई आइडिया हो रही होता है। वो वैसे ही है मेरे ख्याल में, या अगर हैं भी तो वो ही हैं, बस मीठे बने रहो और पैसे निकालते रहो। हम ऐसे बन के पैसे नहीं निकालते हैं साहब, हम सीधे डंके की चोट पे बता के पैसे मांगते हैं और फिर लेते हैं और उनको पढ़ाते हैं। फिर पैसों की बात ही नहीं होती है, पैसा ही हर जगह काम नहीं करता है। कहीं कहीं आपकी टेक्निकल सपोर्ट भी और मॉरल और इखलाकी सपोर्ट भी जो आपकी बनती है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो भी बड़ा मैटर करती है। तो इस लिहाज से वो बच्चा आज पास हो गया। So viewers, what I'm trying to tell you is that whenever you make a lesson plan with somebody, whenever you want to go into the teaching strategy, always use the live example, and the live examples and the critical safety incidents, whether they're there or not, but you can still talk about them. Turn that page around, the other side of the pictures, and start talking about developing hazards and potential hazards. This is what it means from the other side, and you will be able to pass. And if somebody needs help, they can leave a comment. They can, if they want somebody help from my side, from 5151 grade, or join the academy. All these helps and much more is there in the academy. The live videos of mine and all this, it will be available there, and the full version of this video will be available there as well. I mix up the both language for English and the Urdu, but because I know most of my viewers are within this language and they understand, and some they, if they want to get a bit more clarification, because in your own language you can always explain in a bit more detail and bit more live logic examples. So if you want, and if you go into those, and serious people, obviously
the psychologically problem is there. That's why the part 3 is not becoming successful. Otherwise, if he comes to teaching, maybe yes, 20%. If he comes to knowledge, 20%. If he comes to understanding, 20%, 60%. If he comes to skills, maybe 20%, 80%. The remaining 20% that you people not being able to implement that 80% onto your part 3 test is psychological. And that's like psychological 20% wash 80% as well. Because if you are worried about something, and if you have something else, and the mental and the nerves and all that not letting you focus and decide on that side, then whatever your knowledge will be, you will not be able to deliver. Suppose the example I come across, because I use logic, I talk logic. I use that I was somewhere where I have to show a text message or the proof, and I wanted to get from the phone. And in the morning, I've seen it, and I knew it's there, and I can take it out there. But within that time, when they said, okay, no problem, can you show us that? And I was trying to find, I'm telling you, I could not find. Then I started implementing that on the test day with the learner, with on the move, and I goes, okay, so if that's the case, I've saw the message, I knew the message is there, but I can't find it now. So I then gone into the techniques, and then I thought to myself, you should keep the date and the message, or leave a screenshot or something. And it's like phone. So you might have something there, and when you're trying to scroll and look for it in that time, you will not find it. And then that stress will not go down. If you find it, it's fine, but then it'll pick up more. Oh, where is it? And it might be there. It's like in the house, if you want to find something, and it might be on the table. It might be there in front of your eyes, and somebody else will say, what you looking for? Oh, this, I can't find it. It's not there. It's just there. So that is the human nature. And that's what the main problem is on the day of the test, because the time is limited. They have told you, we want to be back in this time. All that knowledge, because it's a very early stage, you are weak on it, you have no proper feedback or the proper somebody who's verified it. And then after all this, it will be yourself who will be taking these words out on that day. And you will be thinking, it will be other time, route, learner, problem, this, plan, strategy, teaching, all those things. And again, this is human nature, that if we have one or two things to deal, we are maybe okay, depending on the zenith or the intelligence. But if we have to deal 5-10 things, then again, think about it. It will be again a challenge, that even though you're very good, you are very intelligent, and you know everything, but still it will go into the side of the problems, that you will not be able to get it. So the part 3, I think there's no issue to pass. I think there is no problem to pass. And there are people that they wanted to say, okay, can we have this, and just pass, and then we'll see it later. I don't help things like that. But even if they pass, let's talk about this. That if they pass, do you think that they will achieve? They will have all that knowledge? They will bring up all those things? When you wanted something and there is a restriction there, you will put effort there. You will try to learn. You will go down. I'm getting calls, and people want me to book and give them 2 hours or 3, and you will try to learn and move on to achieve. But if you are past and they start, what you going to do with that badge? You need to teach. You need to establish your business. You're doing this after all. You're doing this for the sake of money, isn't it? You can earn, you can get in, you can stay in a job of your own choice. And if you have no that skills,
and the learner not putting the words and the deleting number away and trying to go and find somebody else, then it's no good. It's not that effective. You want this to understand, and the people who already started this, they have got the understanding. It's not that they don't. Lesson plan, that if you say I want to make a lesson plan and I don't know what to do, it's hard to say, but for me, I can say, why can't you make lesson plan straight away according to the needs and ability of the person that you are teaching that day? If you want to plan junction, if you want to plan positioning, if you want to plan mirrors, if you want to plan the moving off and stopping, if you want to plan the signals, they're there. The things that you need to teach them, only what things they will be tested on the day of the exam to stump it that they're safe in those. Make them safe on those things. So if you're making the positioning plan, what things that you'll teach them? Position, normal driving, and lane discipline. And if they're driving too close, they're driving slow. Why? You got to understand this. And if they're driving fast, they will be driving away from the curb. Progress. You can make all those plans and get into those things very easily. Junction plan, observation, turning left, turning right, approach speed. It starts from all those things. But it should not be planned too many things. If you give a learner too many things, they will get into trouble. Hope that helps.